Dear students, welcome back to physical chemistry classes. In my last video, I have discussed all the interesting gas laws, Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, combined gas law, as well as ideal gas equation. So, in today's video, you will find another law, that is Dalton's law of partial pressure. Okay. So this law was formulated by John Dalton in 1801, and the statement of that law is the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases. कौन स्टेटमेंट ना पिलाने डाल्टन्स लॉ कहले कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस is equal to the sum of partial pressure of individual gases, and here the gases are non-reactive. So let us understand what is the meaning of this total pressure. Let us understand what is this non-reactive means, and let us understand what is this partial pressure is all about. Okay, so total pressure means, dear students, all of you look, suppose this is a container and here we put neon, let us put oxygen, let us put nitrogen. So these are the gases. We enclosed all three of these gases in a single container, and the pressure exerted by this mixture of gases, that is known as total pressure. Total pressure means what? Now the overall pressure exerted by the mixture of gases. Here in a single container we enclosed neon, oxygen and nitrogen. So the overall pressure exerted by this mixture of gases, that is known as total pressure. Now what is this partial pressure mean? So the partial pressure means the individual pressure, that means how much pressure this neon exerts, how much this oxygen contributes to this total pressure, and how much this nitrogen contributes. So पिलामाने मु कहली गोटे सिंगल कंटेनर रे आमे नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नेले. This is the mixture of gases, and the pressure exerted by this mixture of gases, that is known as total pressure. जदि नियॉन रो प्रेशर कोन आमे ताको डिनोट करले P नियॉन, ऑक्सीजन रो डिनोट करले P ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डिनोट कले PN2. सो एटा होची इंडिविजुअल प्रेशर. ए गैस माने इंडिविजुअल केते प्रेशर दउछन्ते, दैट इज पार्शियल प्रेशर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉन रिएक्टिव? सो नॉन रिएक्टिव मीन्स दिस ऑल दिस थ्री गैसेस, neon, oxygen and nitrogen, they do not react chemically. So that is the meaning that they are non-reactive gases. Okay. So this Dalton's law of partial pressure, this law holds good when the gases do not react chemically, and here the important thing is all these gases, these are held or these are enclosed in a constant volume and at a constant temperature. So पिला माने मु कोन कहली ना Dalton's law of partial pressure कोन तार स्टेटमेंट ता कोन ना आमे जदि टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखिबा, हमर टोटल प्रेशर आमे गोटे कंटेनर रे तीनटा सपोज तीनटा डिफरेंट गैस नेले. सो ताको आमे कहले मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो ओवरऑल प्रेशर, ओवरऑल मिक्सचर ऑफ गैसेस केते प्रेशर दउसंती, दैट इज टोटल प्रेशर. इंडिविजुअल गैस केते प्रेशर दउसंती, दैट इज द पार्शियल प्रेशर. आउ आमे कंटेनर रे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबा ना, ए कंटेनर रे जो गैस नै थिबा एमाने निज निज भितरे केमिकली रिएक्ट करू नथिबे. ओके. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट, लाइक हियर द गैसेस आर नॉन रिएक्टिव and here the gases are enclosed in a constant volume and at a constant temperature. Okay. So pilamane, I hope all of you understood what is the meaning of this non-reactive, what is meant by this total pressure and partial pressure. Okay. So now let us understand this Dalton's law of partial pressure mathematically with a little bit derivation. Okay.
So mathematically what we can write, P total pressure, I denoted that as P total, that is equal to the partial pressure of individual gases. So I can write P1 plus P2 plus P3 and dot dot dot. And here temperature and volume we kept constant. Okay. So एठी कौन ना पिला माने मैथमेटिकली मु कौन लिखिली ना P total टा तमरो कौन हैला ना P1 P2 P3 तार सम P1 plus P2 plus P3 plus dot 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 जेतेटा गैस थिबे सेतेटा हम एटी सपोज नेले ना तीनटा गैस अछि सेतमे मु P1 P2 P3 लिखिबो जदि चारटा थिबो P1 P2 plus P3 plus P4 like that वे लिखिबो तो एठी this P total means this is the total pressure. This is the total pressure exerted by the mixture of gases, and this P1, P2 and P3, these are partial pressure of individual gases. एतिकी बुझिला तो ये कौन देखिले ना एठी देखिले कि डाल्टन्स लॉ कौन कहला ना सपोज आमे गोटे कंटेनर रे तीनटा नॉन रिएक्टिव गैस नेले ओके तो टोटल प्रेशर से माने केते एक्सर्ट करिवे ना टोटल प्रेशर केते एक्सर्ट करिवे ना टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स ओके तो एतिकी बुझिला मैथमेटिकली आमे लिखिले कौन ना P total इज इक्वल टू P1 plus P2 plus P3 blah 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 जेतेटा गैस थिबो सेतेटा पार्शियल प्रेशर को हमें ऐड करिवा ओके सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस Dalton's law of partial pressure little bit more. So now I am going to explain how we will express this partial pressure, how we will express this partial pressure in terms of mole fraction. So partial pressure in terms of mole fraction. Okay, so what is this mole fraction is all about, that I will explain subsequently. I have already explained what is meant by partial pressure. I will explain this term, what is mole fraction right now. Okay, so now let us see, suppose we have three different gases. We have three gases. These are enclosed in a container with volume V at temperature T, having, you can say, partial pressure, having partial pressures of P1, P2 and P3. So पिला माने मु कहली सपोज हमें गोटे कंटेनर रे तीनटा गैस नेले, गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, गैस नंबर 3, तांकर प्रेशर केते ना P1, P2, P3. ओके, एटी वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखले. ओके, तो आमे पिला माने हमें आइडियल गैस इक्वेशन रे कोन पढिथिले मन पकाओ ना, आइडियल गैस इक्वेशन रे पढिथिले कौन पढ़ते ना PV इक्वल टू nRT. कौन पढ़ते PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस रे पढ़ते. तो हमें सिमिलरली कौन लिख परिबा ना P1 कौन लिख परिबा ना P1 into V इज इक्वल टू N1 RT. बट V टा कांस्टेंट रखली सेतै से V पुट करली, T कांस्टेंट रखली, T लिखली, R इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो हम कौन लिखली पिला ना P1 V इज इक्वल टू N1 RT लिखि परिबी.
तो मुझे जस्ट रिअरेंज करके P1 टा लिखि परिबी कोन ना N1 RT by V एतिकी लिखि परिबी ना नहीं तो माकु देली इक्वेशन नंबर 1. Similarly, for gas number 2, we can write P2 is equal to N2 RT by V. Similarly, equation में लिखले P1 V is equal to N1 RT. मु P1 को रखली V टा को सेपरेट नेली तो P1 लिखली N1 RT by V. तो similarly P2 लिखली N2 RT by V. Equation number 2 देली. Similarly P3 लिखली N3 RT divided by P. एतिकी लिखि परिबी. Yes or no? So, as per Dalton's law of partial pressure, P total, that is the total pressure exerted by the mixture of gas molecules, this is what? P1 plus P2 plus P3. Yes or no? I mean Dalton's law of partial pressure देखिले कि we have P total pressure है sum of partial pressure of individual gas molecules. माने P total है P1 plus P2 plus P3. तो आम ये P1, P2, P3 रे जो वैल्यू अच्छी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 रू we can put all those things. So I'm writing N1 RT by V plus N2 RT by V plus N3 RT by V. Yes or no? Now पिला माने हमें एठी RT by V कॉमन नहीं परिबा. Yes or no देखिनियो तला को लिख परिबा N1 plus N2 plus N3. Yes or no? तो ए इक्वेशन टा को दे देले इक्वेशन नंबर 4 कौन देले इक्वेशन नंबर 4. सो P total is equal to RT by V into N1 plus N2 plus N3. Okay, till this it is okay. Now हमें इक्वेशन 1 रे देखिले P1 हैला N1 RT by V आओ इक्वेशन नंबर 4 रे देखिले P टोटल हैला RT by V into N1 plus N2 plus N3. सो पिला माने हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करबा तो लिखिली P1 by P total is equal to यदि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करिबी तो एपटे लिखली P1 by P total सेपटे लिखिबी कोन ना N1 RT by V divided by RT by V N1 plus N2 plus N3. So RT by V cancel out. So we can write this is N1 divided by N1 plus N2 plus N3. Yes or no? तो एठी कौन मिलला हमको ना P1 मिलला P1 by P total मिलला N1 divided by N1 plus N2 plus N3. तो पिला माने एठी मु लिखि परिबी N1 by N आउ एठी N हैला टोटल नंबर ऑफ मोल्स को मु N1 plus N2 plus N3 लिखिली एटा कोन ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो मागुरु भी कहिची एठी जो हम आइडियल गैस इक्वेशन रे अछि N1 टा कोन ना नंबर ऑफ मोल्स. तो एठी N1 हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस, N3 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड गैस. तो मु सब जाक मिसी गले ताकू टोटल लिखिली टोटल नंबर ऑफ मोल्स ताकू मु डिनोट करली कोन ना N द्वारा. ओके तो एति कि जे सब बुझिला. तो आमे देखिले कोन ना आमे देखिले कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कला परे हमको मिलला कोन ना P1 by P total is equal to N1 divided by N. Okay, एटा को मु लिखिली x1. So this is actually the mole fraction of first gas. तो मोल फ्रैक्शन पिला माने कोन आकु मु देई दउची इक्वेशन नंबर 4 देथिले इक्वेशन नंबर 5. सो मोल फ्रैक्शन पिला माने कोन ना मु जदी कभी मोल फ्रैक्शन फर्स्ट गैस रे कैलकुलेट कर कोन करबो ना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करबो नंबर ऑफ मोल्स of that first gas divided by total number of moles. So this is the way how you can calculate now mole fraction. So mole fraction of the first gas
is I denoted that as x1, and that is n1 divided by n. N1 means the number of moles of first gas divided by the total number of moles. Suppose I will ask calculate how you can write the mole fraction of second gas. So that you can write x2, and x2 is equal to n2, that means the number of moles of the second gas divided by the total moles. Okay, how you can write mole fraction for different gases. So mole fraction of gases. So for first gas you can denote it at x1, and you can write this is n1 by n. For second gas you can write x2, that is n2 by n. And similarly for third gas you can write x3, that is n3 by n. ओके सो पिला माने कोन कहली ना मोल फ्रैक्शन हम केमती कैलकुलेट करबा. मोल फ्रैक्शन को हम x द्वारा डिनोट करू. फर्स्ट गैस पे मु डिनोट करली x1 कोन ना नंबर ऑफ मोल्स केते फर्स्ट गैस रो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स माने n1 डिवाइडेड बाय n. सिमिलरली फॉर सेकंड गैस दैट इज x2, n2 डिवाइडेड बाय n, and x3 that is n3 divided by n. Okay, so from equation number 5 we can write P1 is equal to, I am just rearranging this equation number 5 and I am writing P1 is equal to x1 into P total. Okay, so this is the very important formula, that is here P1 is what? P1 है partial pressure of first gas molecule, partial pressure of first gas. So partial pressure of first gas is equal to mole fraction of first gas into total pressure. Okay, so this I am giving as equation number 6. So पिला माने हम equation number 6 रे कौन equation number 5 टा को just rearrange कर ले, P total टा मु multiply कर ली, तो मु कौन लिखिली ना partial pressure P1 कौन हैला ना P1 हैला mole fraction of that first gas into total pressure. तो मु सेटा को आउथरे लिखुची. So हमें कौन पाइले ना P1 हैला x1 into P total. तो पिला माने similarly for second and third gas we can write P2 हैला mole fraction of second gas into, that is x2 into P total. Similarly P3 what we can write, that is x3 into P total. So एठी गोटे दिन से important मन रखिबा कि हमें partial pressure हमें each gas रा partial pressure हमें केमिति calculate करिबा. So in a more general way what we can write now partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. Okay, so try to remember this, that partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. Okay, so हमें Dalton's law of partial pressure पिला मैंने देखिले कि partial pressure हैला कौन ना mole fraction into total pressure. So then what are the applications, like what are the practical implications of this law? The first one is by using this formula you can calculate what? You can calculate the partial pressure of each gas molecule. So you can easily determination of partial pressure, that means you can easily calculate partial pressure of each gas molecule. Similarly you can calculate the total pressure of determination of total pressure of a mixture of gas. The second application, that means using this formula, that is the partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. So you can easily calculate partial pressure. You can calculate the total pressure exerted by the mixture of gas molecules. And the third application is, पिला माने देखो
आमे जो मॉइस्ट गैस को कौन लिख परिबा ना मॉइस्ट गैस होची ड्राई गैस आदरे जदी वाटर वेपर थिबो तले आमे आको ही मॉइस्ट को द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन ए थिंग वी कॉल्ड इट एज मॉइस्ट ओके तो आमे एठी लिखि परिबा कोन सिमिलरली बाय अप्लाइंग दिस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वी कैन राइट pressure of this moist gas is equal to pressure of dry gas plus pressure of water vapor. Yes or no? Okay. So आमे पिले माने देखिले moist gas कौन ना dry gas और water vapor जोटी water vapor थिबा हम सेटा को moisture कहू तमे जानि थिबा तो मु लिखिली moist gas टा कौन ना dry gas और water vapor रा addition माने मिक्सचर टा होची तमर moist gas तो by applying this Dalton's law of partial pressure we can write जदि pressure moist gas रा कौन हबो ना pressure moist gas रा is equal to pressure dry gas plus pressure of water vapors तो पिले माने ए प्रेशर ए वाटर वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करे that is known as aqueous tension okay so you can write pressure moist gas is equal to pressure dry gas plus aqueous tension so you can easily write that or you can easily calculate the pressure of dry gas how now pressure moist gas minus aqueous tension so this aqueous tension is what now the pressure means the water vapor the vapor pressure of this water that is known as what na aqueous tension the vapor pressure of water that is aqueous tension or this is aqueous tension okay so पिला माने मटे कोन कहली ना moist gas होची dry gas आउ water vapors रा mixture okay तमे लिखि परिबा pressure moist gas is equal to pressure dry gas plus pressure water vapor तो सेही मु कहली जो water vapor जो pressure exert करले ताको vapor pressure को बा aqueous tension को okay तो मु सेथि पय लिखि देली कोन ना pressure moist gas is equal to pressure dry gas plus aqueous tension तो एठु मु pressure dry gas रो केते pressure बा केते partial pressure सेटा इजीली कैलकुलेट करि परिबा ना partial pressure of moist gas minus aqueous tension so these are the three applications of this Dalton's law of partial pressure first one you can easily calculate the partial pressure of individual gas molecules the second one is you can easily calculate the total pressure of exerted by this mixture of gases and the third one is you can calculate the partial pressure of dry gas okay so I am asking a very simple question now so the question is like this suppose in a container we have this hydrogen and the pressure of this hydrogen is 1 atmosphere similarly in the same container we have neon and the pressure exerted by this neon that is let's say 340 millimeter of mercury and the third one is suppose in the same container we have nitrogen and it exert 3 atmosphere pressure so these are the partial pressure given suppose I will ask calculate the total pressure so you can easily calculate how this is the formula this is the Dalton's law of partial pressure that is P total is equal to P1 plus P2 plus P3 yes or no but see here the units of this pressure these are different पिला माने मु देली पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन रो नियॉन रो नाइट्रोजन रो बट देखो यूनिट जो प्रेशर जो यूनिट एमन सब डिफरेंट यूनिट रे अछि त हमको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करिया को कहि छी केमिति कैलकुलेट करबो ना टोटल प्रेशर हैला P1 plus P2 plus P3 or you can write P hydrogen P neon and P nitrogen तो ये देखो पिले माने प्रेशर यूनिट डिफरेंट यूनिट्स रे अछि तो फास्ट कौन करिवो ना तुमको सेम यूनिट आनियो पड़िबो तो मु लिखि परबी 1 एटमॉस्फेयर हैला 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एटा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सेकंड ऑलरेडी अछि थाटा मु लिखि परबी 3 into 760 दैट इज 2280 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो एबे देखो सब जगह मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रे आसी गला यूनिट
सब जगह प्रेशर यूनिट एवं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को कन्वर्ट कर देली तापर मु इजीली टोटल प्रेशर कैलकुलेट करि परिबे ना 760 plus 340 plus 2280 that is 1000 that is 3280 millimeter of mercury. So this is the total pressure exerted by the mixture of gases. Okay. So पिला माने हमें आजिरो क्लास रे कौन देखिले ना जदि हमें गोटे कंटेनर रे 2 to 3 डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स नबा थ्री डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स नेले तो टोटल प्रेशर से माने केते एक्सर्ट करिवे ना तांकर इंडिविजुअल प्रेशर जति की सेटा को हमें ऐड कर देले हमें पाई परबे कोन ना टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ओके, so this is all about today's class. In my next video, that is the second part of this Dalton's law of partial pressure, I will solve a numerical problem. Okay, thank you for hearing me. Bye bye.